Hello everyone, welcome to all in the series of real analysis. हमने लास्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ा, अब हम स्टार्ट करते हैं सीरीज ऑफ फंक्शन. So let f and x be a sequence of real valued function on closed interval AB, then summation n equals to 1 to infinitive f and x is called series of functions and denoted as okay. Then f and x is called nth partial sum of series f and x. Okay. Next लिखिए convergence of series of function. So series is said to be uniformly convergent or pointwise convergent according as sequence of partial sums is uniformly convergent or pointwise convergent. Respectively. ठीक है. So अगर sequence of partial sums uniformly convergent है and if the sequence s and x is pointwise convergent, then the series f and x is pointwise convergent. ठीक है. अब एक टेस्ट लिखिए to test the convergence of the series. A series of real valued function defined on closed interval AB converges uniformly
on closed interval AB if there exists a convergent series of positive number such that Fnx is smaller than equal to Mn for all n and for all x belongs to closed interval AB. ठीक है, so एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. Show that n equals to 1 to infinity summation Fn is uniformly convergent series of functions for all x belongs to R where Fnx is equals to cos nx upon n square. So now we know that Fnx is equals to cos nx upon n square. एंड हमें पता है कि जो cos nx है मतलब cos x है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है. ठीक है, सो मॉड्यूलस ऑफ cos nx is smaller than equal to 1. So it is smaller than equal to 1 upon n square for all x belongs to R. Okay, but the series summation 1 upon n square is convergent. Therefore, by Weierstrass test, the given series is uniformly convergent for all x belongs to R. नेक्स्ट लिखिए Dirichlet टेस्ट. Let Pnx be a monotonic function of x for all x belongs to closed interval AB and Pnx uniformly converges to 0 on closed interval AB and if modulus of summation QRx is smaller than equal to K for all x belongs to closed interval AB and for all n. Then the series
Bnx, Qnx is uniformly convergent on closed interval AB. अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. Show that the series is uniformly convergent in every bounded interval. But does not converge absolutely for any value of x. So the given series is for all n belongs to closed interval AB. X belongs to closed interval AB. Where AB is bounded interval. Let unx equals to minus 1 raised to the power n and Pnx equals to x square plus n upon n square. Then Bnx is smaller than b square plus Bnx क्या है? Bnx है x square plus n upon n square. अब ये छोटा होगा, x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग कर रही है? क्लोज इंटरवल a to b में. तो x की हर एक वैल्यू जो होगी b से छोटी होगी, तो हम इसको लिख देते हैं b स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर for all x belongs to closed interval AB. So clearly Pnx is positive plus monotonically decreasing function of x for all x belongs to closed interval AB, and in x is greater than equal to a, smaller than equal to b, converges uniformly. ठीक है. अब देखिए Qnx equals to minus 1 raised to the power n oscillate finitely. So therefore, by Dirichlet test, the series converges uniformly on closed interval AB. So now modulus of fnx क्या होगा? minus 1 raised to the power n x square plus n upon n square is equals to x square plus n upon
by n square which is equals to, and it is smaller than equal to x square अपॉन x को हम b से रिप्लेस कर देंगे, b स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n। अब देखिए इसको किसके इक्वल लिख देंगे, b स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n। अब ध्यान से देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है 1 अपॉन n की पावर p, ये कन्वर्जेंट कब होती है, जब p इज ग्रेटर देन 1। तो समेशन 1 अपॉन n क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, एंड समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर कन्वर्जेंट, एंड समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर कन्वर्जेंट है, तो b स्क्वायर समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर कन्वर्जेंट होगी। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो सीरीज 1 अपॉन n है, समेशन 1 अपॉन n है, वो डाइवर्जेंट हो जा रही है। So now the series 1 upon n is divergent. This implies that the series plus 1 upon n is also divergent. And therefore the series x square plus n upon n square is not absolute convergent for any value of x. Is not absolutely convergent for any value of x. नेक्स्ट देखिए Abel's टेस्ट। Let Pnx be a positive bounded plus monotonically decreasing sequence and monotonically decreasing function of n for all x belongs to closed interval AB. And if the series UNX is uniformly convergent on closed interval AB, then the series Bnx and Qnx is uniformly convergent on closed interval AB. ठीक है, तो कोई फंक्शन है Bnx जो कि पॉजिटिव है, यानी b1, b2, b3 हर एक पॉजिटिव टर्म है, एंड प्लस ये बाउंडेड है, इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मीन्स b1x is greater than b2x is greater than b3x and so on। ठीक है, for all x belongs to closed interval AB। एंड जो सीरीज है UNX वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है क्लोज इंटरवल AB पर। देन द सीरीज PNX UNX इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल AB। ठीक है, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
show that the series is uniformly convergent in closed interval -1 to 1. ठीक है. So the given series is so let Pnx equals to modulus of x raised to the power n and Unx is equals to -1 raised to the power n upon n. ठीक है. Then when x is greater than equal to -1 and smaller than equal to 1, तो Pnx होगा वो बाउंडेड होगा. Pnx is बाउंडेड. ठीक है. Because when x is greater than -1 and smaller than 1, then x raised to the power infinitive अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0. And when x equals to 1, then Pnx equals to 1 for all n. And when x equals to -1, then Pnx is also equals to 1 for all n. ठीक है. So this function is bounded. Bounded and also is greater than 0 for all x greater than equal to -1 smaller than equal to 1 and n belongs to n. ठीक है. So ये पॉजिटिव भी हो गया and also monotonically decreasing. हर एक x जो बिलोंग करेगा -1 से 1 तक उसमें ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा. कैसे देखिए, when x is greater than -1 and smaller than 1, then suppose 1/2 ले लेता है. 1/2 then 1/2 raised to the power 2, 1/2 whole cube. तो डिक्रीज हो रहा है ना. 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे ही जितनी भी टर्म होगी -1 से 1 के बीच में उन सभी के लिए डिक्रीज होगा. ठीक है. And also when x equal to 1 and -1 it is constant. So we can say it is monotonically decreasing. ठीक है. And Unx क्या है? -1 raised to the power n upon n is uniformly convergent by Leibniz's test. So therefore, by Abel's test, summation Bnx Unx equals to summation -1 raised to the power n upon n modulus of x raised to the power n is uniformly convergent on closed interval -1 to 1. ठीक है. अब लिखिए पावर सीरीज.
a series of the form तो इस टाइप की कोई सीरीज होगी जहां जो a0 a1 a2 है ये सारे कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं पावर सीरीज इन x सेंटर एट 0। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखिए, अ कांस्टेंट नंबर r is greater than equal to 0 such that the power series converges for modulus of x is smaller than r and diverges for is called the radius of convergence of the power series। अगर कोई पावर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है और x where x modulus of x is smaller than r, then x is greater than minus r and smaller than r is called the interval of convergence of the power series, and also every power series is convergent for x equals to 0। तो ये दोनों चीजें भी हम लिख लेते हैं। नोट, if the power series is convergent for then is called the interval of the sequence, interval of convergence of power series, convergence of power series। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -r/r। ठीक है, एंड every power series is convergent for x equals to 0। And if r equals to 0, then the power series
converges only for x equals to 0. And if r equals to infinitive, then the power series converges for all real number, and in this case the series is everywhere convergent. For all x belongs to R, and in this case the series is everywhere convergent. नेक्स्ट एक थ्योरम लिखिए, if the power series is such that an is not equal to 0 for all n, and 1 upon r equals to limit n tends to infinitive an plus 1 upon an, then the given power series is convergent for and divergent for, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी लिख लेते हैं, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, ठीक है। एंड ये जो थ्योरम है वो प्रूफ होगी बाय अप्लाइंग डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो इसका प्रूफ भी लिख लेते हैं, नॉर्मल हिंट दे देती हूँ, आप खुद ट्राई करना। un क्या होगा, en x raised to the power n, एंड un plus 1 क्या होगा, an plus 1 x raised to the power n plus 1, ठीक है। देन लिमिट un plus 1 अपॉन un निकालेंगे तो क्या बचेगा, an plus 1 अपॉन an यहाँ पर x, ठीक है। और ये बचेगा एंड an अपॉन an प्लस 1 अपॉन an क्या दिया हुआ है, r, सॉरी 1 अपॉन r, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन r। तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा देंगे कि ये स्मॉलर देन 1 होगा, देन ये सीरीज कन्वर्ज करेंगी, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट लिखिए, if a power series converges for x equals to x naught, then it is absolutely convergent in the interval ठीक है। In second, it is
uniformly convergent in the interval here smaller than x naught. ठीक है, प्लस एक और थ्योरम लिख दीजिए, सपोज a power series converges for modulus of x smaller than r and that fx is equals to summation an x raised to the power n. Then fx is continuous in open interval minus r to r, and secondly an x raised to the power n can be differentiated term by term on minus r to r open interval by f dash x equals to summation n x raised to the power n minus 1, where modulus of x is smaller than r. And further, the differentiated series has the same radius of convergence as of summation an xn, that means the power series. ठीक है, and third one लिखिए summation an xn, that means the power series can be integrated term by term on open interval minus r to r, and the integrated series has the same radius of convergence as of the power series an summation an x raised to the power n, and the integrated series ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Find the radius of convergence R of the power series x raised to the power n upon n. ठीक है, so we have an equals to 1 upon n, ठीक है, and an plus 1 equals to 1 upon n plus 1, therefore an plus 1 equals to 1 upon n plus 1. So 1 upon r equals to limit n tends to infinitive an plus 1 upon an
equals to limit n tends to infinity 1 upon n plus 1 upon n equals to limit n tends to infinity n upon n plus 1. एंड डिनोमिनेटर में से n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा n अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा एंड लिमिट अप्लाई कर देंगे व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n टेंड्स टू 0, देन ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 एंड इट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, हेंस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1. And the series is convergent for all x greater than -1 and smaller than 1. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए. Find the radius of convergence and the exact interval of convergence of the power series ठीक है. So an is equals to -1 raised to the power n upon 2 raised to the power n 3n minus 1, and therefore an plus 1 equals to -1 raised to the power n plus 1 x minus 1 raised to the power n plus 1 upon 2 raised to the power n plus 1 3n plus 1 minus 1. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3n plus 3 minus 1, दैट मीन्स 3n plus 2. तो यहाँ पर 3n plus 2 लिख देते हैं. n plus 2. ठीक है, thus 1 upon r is equals to limit n tends to infinity an plus 1 upon an equals to limit n tends to infinity an plus 1 क्या है -1 की पावर n plus 1 upon 2 की पावर n plus 1 और 3n plus 2 upon -1 raised to the power n 2 की पावर n plus 1 2 की पावर n 2 की पावर n and 3n minus 1. अब देखिए मॉडुलस लगा हुआ है, सो -1 रेज टू द पावर n एंड -1 रेज टू द पावर n plus 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी. देन इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 1 अपॉन, ये अपॉन में आएगा इसमें 1 अपॉन 2 की पावर n plus 1. अच्छे से लिख लेते हैं इसको एक बार. क्या आएगा -1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n 3n plus 2. ठीक है, so it is equals to limit n tends to infinity 1 upon 2 की पावर n plus 1 3n plus 2 upon 1 upon 2 की पावर n 3n plus
1, 3n माइनस 1, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 3n माइनस 1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर n 3n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 3n प्लस 2, यहाँ 3n माइनस 1 आएगा 3n प्लस 2, ठीक है। n को कॉमन ले लेते हैं, देन क्या बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन n, एंड डिनोमिनेटर में 2 की पावर n प्लस 1 को कैसे लिख लेते हैं, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 2, एंड n को कॉमन ले लेते हैं, देन क्या बचेगा 3 माइनस 2 बाई n, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, एंड n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, देन क्या बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 3 माइनस 2 अपॉन n। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, when n tends to infinity 1 upon n and 2 upon n tends to 0, so 3 minus 0 upon 2 3 minus 0 is equals to 3 upon is equals to 1 upon 2, ठीक है, and hence the radius of convergence is 2. Hence r is equals to 2. Therefore the interval of convergence of the given power series is, ठीक है, और इक्विवेलेंटली हम ये भी लिख सकते हैं कि x minus 1 is greater than minus 2 and smaller than 2. This implies that x is greater than minus 2 plus 1 and smaller than 2 plus 1. This implies that x is greater than minus 1 and smaller than 3. But for x equals to 3, the power series is which is convergent by Leibniz test. इसमें Leibniz test अप्लाई करना, तो उससे ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन 3n माइनस 1 डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एंड व्हेन लिमिट अप्लाई करेंगे व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 3n माइनस 1 टेंस टू 0, तो इसमें हम लेब्निटीज टेस्ट अप्लाई कर देंगे। So by applying Leibniz test, the power series is convergent when x equals to 3. Which is convergent by Leibniz test. So therefore the interval of convergence is -1 to 3 पर क्लोज इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हमारा r कुछ a आया है, देन जो पावर सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी फॉर x ग्रेटर देन -a एंड स्मॉलर देन a, एंड जो ये बाउंड्री पॉइंट्स है इन पर हमें चेक करनी पड़ेगी कि कन्वर्जेंट है या नहीं है, एंड फॉर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a इस पर ये डाइवर्जेंट हो जाएगी सीरीज, ठीक है।
सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। सीरीज ऑफ फंक्शंस हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। सो थैंक यू।